आज हमारा जो टॉपिक है अंडर वेक्टर्स, द इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. You should remember that when being a science student, you must have studied the dot product and cross product in physics class 11. So the product of two vectors is very different than of the two numbers or two scalars. नंबर्स में 5 × 3 करें तो 15 ही आएगा. दो टाइप से प्रोडक्ट होता है, बताने की जरूरत नहीं है. दिस इज 15 and this is also a product in terms of expression dot or cross. The results are same in case of numbers, but if there are two vectors, now we have understood the difference between vectors and scalars. So these two types of product are not same. So on the basis of this, there are two types of product of vectors. First is scalar product, or it is known as dot product. Why this is scalar product? Since if you multiply two vectors in this category, then this will be an scalar quantity and this will be a vector quantity. So depending upon the values, this is a scalar product because this is a scalar quantity as a result, or a vector product. This is also called dot product because it is denoted by a dot and this is denoted by a cross. So this will be called cross product. Next and last topic after this. So first we have to understand what is the dot product and what is the value of a dot. Suppose these are two vectors denoted by A and B, OA and OB, and they are inclined at an angle theta. Then the scalar product of these two vectors A and B, this is equal to the product of their magnitudes and cosine of angle between them. That is, A dot B is magnitude A or modulus A, magnitude B and cos theta. Why this is a scalar quantity? Modulus is a number, positive number you have calculated in the last topic introduction. Modulus B is a scalar quantity, it is also a number, and cos theta is also a scalar quantity. So in this right hand side, there is no expression denoting the direction. You know what is vector? Vector is a quantity having magnitude and direction. I told you, unit vector represents the direction of the vector. Okay, so this is A dot B, this is a scalar quantity. If you find B dot A, what is B dot A? Same definition. But remember, in vectors, direction plays a very important role, or due to direction it is vector. So whenever we need to find B dot A, it will be magnitude B, magnitude A, and what is cos? You cannot change the direction if you reverse the direction. This will be minus theta. Here, important point. Theta is the angle between A and B, measured from A to B, directed from A to B. तो अगर आप B to A लेंगे, this becomes minus theta. So, if you consider the same direction, then the angle between B and A will be this. What is this? It is 2 pi minus theta or 360 minus theta. Total angle is 360. So for this case, angle to be taken 2 pi minus theta. And what is cos 2 pi minus theta?
This is also cos theta. Cos 360 minus theta, cos theta. Suppose you take negative angle, cos minus theta, that is cos theta. Negative angle is considered in the fourth quadrant, and in fourth quadrant cos is positive. This is cos theta. So, what is the conclusion? This is a very important conclusion and will be used many times, that A dot B and B dot A are same. That is, the dot product is commutative. Dot product is commutative. This comes under the property of dot product. अभी हम और इसकी property discuss करेंगे. तो मैंने property नहीं लिखा, ध्यान रखना कि the dot product is commutative. That is, A dot B is equal to B dot A without changing the sign value उनकी same आती है, पहली property. Okay. So now coming to property of dot product. So children, you must remember the definition. To understand any topic, we must proceed through its basic concept, that is definition. Formula सारे इसी से निकले हुए हैं. तो coming to property number 1, if the dot product is 0, then what are the cases when the dot product of two vectors is 0? This gives modulus A magnitude B cos theta equal to 0. So if the product of three quantities is 0, then this is possible when first quantity is 0, magnitude 0 कब होगा? जब वेक्टर 0 हो. Null vector. Vector B is 0 or cos theta is 0, and cos theta 0 means theta is pi by 2 or 90 degree. आप लोग जानते हैं cos 90 0. Or if the two vectors are perpendicular, angle will be 0, then their dot product will be 0. Very important property this is. If two vectors are perpendicular, उनका dot product 0 आप directly ले सकते हैं. This is next point. Property: if two vectors are equal, then what will be their dot product? If two vectors are equal, then what will be angle between them? What will be angle? It is 0. Same line makes 0 angle with itself. Therefore, what is A dot A? A dot B will be A dot A, equal vectors. Magnitude A, again magnitude A, cos 0. That is, A square is magnitude A square. This is also very important property. There are algebraical identities in dot product. ध्यान दीजिएगा, वेक्टर कभी अपने मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होता. वेक्टर क्वांटिटी है विद डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड इज अ नंबर, स्केलर. वेक्टर मैग्नीट्यूड डिफरेंट क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी, बट देयर स्क्वायर्स आर इक्वल. किसी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो नंबर ही आएगा. वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, बट इन केस ऑफ स्क्वायर they are equal. The first property, commutative. Second, perpendicular. Third, equal vectors. Now, A dot B equal to modulus B cos theta. इससे cos theta का भी एक फॉर्मूला निकलेगा. A dot B divided by magnitude A and magnitude B. और जो इस फॉर्मूले को माइंड में सेट कर लीजिए. Whenever you find the angle between two straight lines, same expression आएगा. Angle between two planes, same expression आएगा. Angle between two vectors, यही expression. क्या है? ऊपर dot, नीचे magnitude. Now coming to components. Question आपको यहाँ से मिलेगा. You know
x axis, the unit vector along x axis is I, unit vector along y axis is j, and that for z axis it is k. It is very obvious that what is I dot I. अभी हमें प्रॉपर्टी पढ़ी है. You can write this is I square. That is magnitude I square. That is 1. Because I is unit vector, its magnitude is 1. Similarly, j dot j, k dot k, this is also 1. Also, what is I dot j? J dot k, k dot I will be 0 because I x axis का है, j y axis का है, k z axis का. These are equally perpendicular axis and perpendicular के केस में dot product 0 होता है. अभी हम देखा चुके हैं. So this is let vector A in terms of components a1i plus b1j plus c1k, vector B a2i b2j c2k, then a dot b. ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे. अभी तक जो पढ़ा हमने वो कॉन्सेप्ट था. दिस इज a1i. You will follow these steps b1j c1k dot e2i b2j c2k. So this will be, अब देखो जी, a1i dot a2j, sorry, a2i, this will be a1 a2 because I dot I 1 होता है. अभी देखा है. a1i dot b2j, I dot j 0, I dot k 0, j dot I 0, j dot j 1. So the next term is b1 b2 or c1 c2. So whenever you need to calculate the value of a dot b, you will have to multiply the coefficients of I, jj and kk. बाकी खत्म हो जाएगा. This is a dot b in terms of components. Now, sixth, there are some algebraic identities. Magnitude a plus b square. This is magnitude a square, magnitude b square plus 2 a dot b. It is very similar. A plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. Numbers में तो प्रॉब्लम नहीं है, but in case vectors, ab means multiplication of two vectors. दो टाइप का होता है. तो we have to specify here it is a dot b. Next, a minus b square. What is this? A square b square minus 2 a dot b. And third is modulus a square minus b square. What is this? It is a minus b dot दिखना चाहिए a plus b. This हर बच्चे को आइडेंटिटी बहुत छोटी क्लासेस में मालूम होती हैं. अच्छा, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते a माइनस बी स्क्वायर. मॉडुलस का स्क्वायर करिए चाहे वेक्टर का, मिलता है हमें. सेम दिस प्रूफ देखने का रहेगा आपका. इंपॉर्टेंट चीज है ये. फर्स्ट का प्रूफ देखिए. वेक्टर a प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस लगाइए चाहे वेक्टर लगाइए, एक ही बात है. व्हाट इज दिस?
square means a plus b dot a plus b. अभी प्रूव किया है इसी प्रॉपर्टी में, बिगिनिंग में देखिएगा a डॉट a स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स डॉट, a क्रॉस a जीरो आएगा, देखेंगे बाद में, a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा, a क्रॉस a जीरो हो जाएगा। चलो ठीक, मल्टीप्लाई करो, a डॉट, बहुत छोटे लेवल का काम कर रहे हैं हम, b डॉट this, a dot this, b dot this, open the bracket, a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b. What is a dot a? It is a square, you know. This is a dot b. You know b dot a and a dot b are same. Commutative rule बता चुके हैं. b dot b is b square. So coming to the conclusion, a square is modulus a square. This b square is modulus b square, and this is 2a dot b. 2a dot b. What is this? अच्छा, आप जरूर लिखिएगा, सिंस वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स मॉडुलस स्क्वायर, जब भी whenever we apply vector square in terms of modulus square, we must quote the exact expression, and this is your identity number 1. same to माइनस है, माइनस लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। थर्ड वाली हम देखेंगे, इसका यूज 1 मार्क के क्वेश्चन में काफी होता है। थर्ड को देखिएगा जरा, a माइनस बी डॉट a प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सेम जो अभी मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा डायरेक्ट करिए, a डॉट a प्लस a डॉट b, ये माइनस बी है, minus b dot a and minus b dot b, minus b dot b. You know a dot a वेक्टर स्क्वायर, आप डायरेक्ट मॉडुलस स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस a dot b. You know b dot a and a dot b are same, and this is b square. क्या लिख दीजिएगा, since a dot b is equal to b dot a. Yes, these are cancelled. So what is this? ये magnitude a square, magnitude b square. तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू है a minus b dot a plus b. This is third identity. We have to use the identity directly. प्रूफ नहीं करना, बट इन केस एग्जाम में प्रूफ आ जाए, आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटे लेवल का है, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, कभी नहीं भूलते। लास्ट पॉइंट, प्रोजेक्शन। व्हाट इज, पहले प्रोजेक्शन क्या होता है? सपोज देयर इज अ वेक्टर नॉट इन हॉरिजॉन्टल, बट उसका जो प्रोजेक्शन है दैट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट व्हिच इज पैरेलल टू द, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सीधा फॉर्मूला देखो आप, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके लिए, दो बार पूछा है। प्रोजेक्शन ऑफ vector A on vector B is equal to A dot B divided by magnitude B. That's all. A on B, A dot B upon magnitude B, projection of B on A, A dot B upon magnitude A हो जाएगा। होता क्या प्रोजेक्शन, थोड़ा बता दूंगा आपको। This is the horizontal line and this is a vector. Suppose this is vector A, अब इसका प्रोजेक्शन निकालें हम इस वेक्टर का, दिस इज वेक्टर B, so we draw perpendiculars, this is vector AB and these are point P and Q, so projection is this length of this line segment.
but this length of line segment की जो projection है, this is different from the length of AB. अगर आप इसको थोड़ा ऊपर सरकाओ तो राइट लाइन बनेगा, वेक्टर हाइपोटेन्यूज का रोल करेगा, प्रोजेक्शन बेस का रोल करेगा. This is calculated by this expression. तो ये है. अब हम इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, आपको क्वेश्चंस कैसे करना है, बहुत ही कंफर्टेबल है. हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 10.3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, मिसलेनियस में मिलेंगे. तो चलिए छोटे देखें. फर्स्ट क्वेश्चन, A and B are two vectors whose magnitudes are under root 3 and 2. A dot B is root 6. Find the angle between them. 1 mark question, not more than that. तो आप जानते हैं दिस इज A dot B और यह cos थीटा. हमेशा याद रखिए A dot B divided by magnitude. In this question, cos theta will be A dot B divided by magnitude. फार्मूला लिखना है, वैल्यू बोलिए. व्हाट इज A dot B? अंडर रूट 6 मैग्नीट्यूड A अंडर रूट 3 मैग्नीट्यूड B इज 2. अब रूट 3 से रूट 6 काटेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा या रूट 2? रूट 2. रूट 2 से 2 कैंसिल होगा तो cos theta is 1 by under root 2. So theta will be 45 degree angle. This is your first question for 1 mark. And all the questions will be like this. This is fourth question. Find the projection of this vector on this vector. यहाँ किसका प्रोजेक्शन किस वेक्टर पे लेना है बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इसका सोल्यूशन देखिएगा. Here suppose first vector is A, second vector is B, okay, therefore A dot B. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्ट में क्या होता है I dot I1, तो कोफिशिएंट ऑफ I एंड कोफिशिएंट ऑफ I. It is 1 into 7, 3 into minus 1, तो minus 3 into 1, 7 into 8. So this is 7 minus 3 plus 56. It is 60. A dot B is 60. Now magnitude A under root कैलकुलेशन कर चुके हो. 1 square, 3 square, 7 square. This is under root 59. 1949. Magnitude B in the same way. B 7 square minus 1 square is positive. 8 square is 64 under root 114. Yes. So this is dot, this is magnitude. तो लिखेंगे therefore projection of vector A on vector B is, क्या बताया था? ऊपर A dot B divided by magnitude B, because we calculate the projection on B. What is it on B? 60 under root 59 into under root 114. This is projection. Okay. अब इसमें कुछ नहीं होता, यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए. अगर इनकी वैल्यू कैलकुलेट हो 59 तो प्राइम नंबर रूट आएगा. दिस इज ऑल्सो यहीं पर छोड़ दीजिएगा, कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा. दिस इज द टेक्निक टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ 1 मार्क. फाइंड मैग्नीट्यूड एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए. ध्यान दीजिएगा, कैप नहीं लगा, एरो है.
यूनिट वेक्टर में क्या होता है, बट लिख तो रहा है यूनिट वेक्टर, वी हैव टू कंसीडर और यूनिट वेक्टर ए x माइनस ए डॉट x प्लस ए इज इक्वल टू 12। चलो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज मैग्नीट्यूड x स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड a स्क्वायर इज इक्वल टू 12, magnitude x square. What is magnitude a? It is 1 equal to 12 because a unit vector, so its magnitude is 1. This implies magnitude x square is 13, this, and magnitude x is under root 13. This was the question for 1 mark. Plus minus नहीं लगाना है, मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब ये एक क्वेश्चन है 10, 3 वेक्टर्स आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर c। वेक्टर a गिवन, b गिवन एंड c गिवन। कंडीशन a plus lambda b is perpendicular to c, so find the value of this unknown quantity lambda। बात हुई है properties में, if two vectors are perpendicular then their dot product is 0। क्या लिखेंगे हम, since अब a plus lambda b एक वेक्टर हो जाएगा, a plus lambda b कैलकुलेट कर सकते हो, बट सुनिए a plus lambda b perpendicular to c, this implies a plus lambda b dot c will be 0। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा दीजिए, दिस इज a dot c plus lambda b dot c equal to 0। yes, a डॉट सी डायरेक्ट कीजिए, आई कोफिशिएंट 2 into 3, 2 into 3, then कोफिशिएंट ऑफ j and this 2 into 1, कोफिशिएंट ऑफ k 3, यहाँ पे नहीं है तो 0, 3 into 0, व्हाट इज दिस, a डॉट सी। उसी तरीके से प्लस लैम्डा इज कांस्टेंट b डॉट सी, सेम माइनस 1 into 3, माइनस 1 into 3 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into यहाँ पर k की टर्म नहीं 0, 1 into 0 equal to 0। दिस गिव्स 6 plus 2 8, what is this, minus 3 plus 2, minus 1 lambda equal to 0, this implies lambda is equal to 8। This is the question, for what value of lambda a plus lambda b is perpendicular to c। एंगल नहीं निकालना है, एंगल इज गिवन, you have to apply the condition when the two vectors are perpendicular, their dot product is 0। Question बच्चों, a triangle is given with vertices, find out angle ABC। ABC means this angle is to be calculated। तो जो हमने डायग्राम बनाया था डॉट प्रोडक्ट में, टू वेक्टर्स आर आउटवर्ड वेक्टर, तो ये एंगल ABC BA और BC के बीच में बनेगा। तो आप जानते हैं फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर BA, पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस बी, x2 माइनस x1, a में से b को माइनस करेंगे, 1 माइनस माइनस 1 i, ध्यान दीजिएगा टर्मिनल माइनस नीचे, 2 माइनस 0 j, 3 minus 0 k, this is 2i plus 2j plus 3k, this is d। now BC 0 minus minus 1, 0 minus minus means
प्लस 1 minus 0 j 2 minus 0 k. So this BC will be I plus j plus 2k. Therefore B A dot BC, देखो एंगल कैसे आता है, ऊपर डॉट नीचे मैग्नीट्यूड, बी ए डॉट बी सी, दिस इज बी ए, दिस इज बी सी, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, सारे पॉजिटिव है, 2 into 1 फिर 2 into 1 plus 3 into 2, this will be 6 6 10, this is 10. Now magnitude be under root component 2 square 4, 2 square 4, 3 square 9, under root 17. Magnitude BC under root 1 square 1, 1 square 1, 2 square 4, this is under root 6. तो cos थीटा का फॉर्मूला है, सारी वैल्यू आपके पास आ गई, लिखेंगे therefore cos एंगल कौन सा है, ABC, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, BA डॉट BC मैग्नीट्यूड BA मैग्नीट्यूड BC, it is 10 upon root 17 into under root 6. So this is 10 upon under root 102. This product. अच्छा cos थीटा नहीं बोला, उसमें एंगल बोला है, तो क्या लिखेंगे, therefore एंगल ABC भी cos इनवर्स लगा दीजिए, जानते हैं 10 upon under root 102. इस टाइप से हमें डॉट डॉट से कैलकुलेट करना है, और मैग्नीट्यूड बहुत ही आसान है, मिसलेनियस में कुछ पेड़ क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। तो आज आप लोग इस डॉट प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट कीजिए, और कैसे कैलकुलेट करते हैं डॉट एंगल और ये माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी। थैंक यू फॉर टुडे।